नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्टहैंड 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीडीबी सर की लीगल डिक्टेशन एक्सरसाइज 5 और 6 की आउटलाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एज इट अपीयर्स, एज इट के अंदर जोड़ देंगे अपीयर्स द, तो द इसमें से निकाल देंगे तो एज इट अपीयर्स द हाई कोर्ट हैज टेकन एक्सेप्शन इधर लगा दो, चाहे शन इधर, एक्सेप्शन टू दी, फैक्ट के लिए क्या लगाते हैं और हाफ डेट दी, या टू दी स्पेस देके फैक्ट डेट दी, दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। एप्लीकेशन वॉच मूव्ड, वे को हाफ कर देंगे, मूव्ड व्हेन दी सेकंड जज वॉज अलॉटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, अलॉटेड ऐसे भी लिख सकते हैं, अलॉटेड दी दोनों में। रोस्टर, स्टर का रूप लगा देंगे, रोस्टर टू डील विद दी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 CRPC, ऐसा वाला बना देंगे CRPC टू एप्रिशिएट दी, एस ऊपर लेके जाएंगे श को और हाफ कर देंगे, एप्रिशिएट दी एनालिसिस मेड बाय दी हाई कोर्ट, इसी में जोड़ देंगे बाय दी हाई कोर्ट, वी हैव bestowed our anxious consideration लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं consideration and perused the order impugned as far as the ऐसे भी लिख देते हैं, as far as the ऐसे भी लिख देते हैं। distinction drawn by the high court, या drawn अलग लिख देना, by the high court अपने लिखते हैं इकट्ठा, by the high court passed in a perverse manner, और इकट्ठा लिखोगे तो perverse manner excluding the, x क्या को हाफ करेंगे, d excluding the relevant matters and considering the extraneous matter which deserves to be lancinated in exercise of supervisory jurisdiction to nullify the same, and the other which is fundamentally, सीधा लिख दो या fundamentally ऐसे भी लिखते हैं, fundamentally and absolutely situation based for cancelling the order, cancelling the order of bail यही लिख देना या फिर बेल अलग लिख देना, of bail
because of violation of the terms and conditions of the bail of the order है conditions of the order granting bail and other supervisory circumstances. However, the said situation of circumstances does not arise in the case at hand. In that context, this court held that long-standing convention ये ना नहीं बनेगा सीधा वेनेशन long-standing convention and judicial discipline requires bail application to be placed before the learned judge who had passed earlier orders on a perusal of the aforesaid authorities. It is clear to us that the learned judge who had declined to entertain the prayer for grant of bail, if available, should hear the sound ऊपर आएगा आऊ का निशान hear the sound ही sound नहीं है hear the second application bail application or the successive bail applications it is in consonance with the principles का सिंबल यही है ना पहले लाइन कट हाँ principles of judicial decorum discipline and propriety. Needless to say, unless such principle adhered to, there is enormous possibility of forum shopping, which has
no sanction in law and definitely has no sanctity. These appeals help being preferred or have preferred against the orders passed by the division bench of Punjab and Haryana High Court at Chandigarh. The appellants in special leave petition of 2012 are the Chandigarh एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव दो वर्ड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लिखेंगे, काट देंगे इसे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे लिखेंगे, और ये काट के लिखना है हमेशा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। और इकट्ठा लिखना हो, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। Hospitals Chandigarh. The appellant has filed the special leave petition with the permission of this court, who was not a party either before the single judge or before the division bench of the Punjab and Haryana High Court, leave to file special leave petition was granted या granted, जो मर्जी लिख सकते हो, in considering the grievances expressed by the High Court by the said appellant, High Court नहीं है, by the said appellant, contending that in the event of the impugned orders of the division bench being implemented, या तो ऐसे लिख देना या फिर लाइन के नीचे लिखते हैं implemented, her chance of getting admission to the course of the MBBS, M को हाफ वो डार्क कर देंगे, बी ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा बै लगा दिए एस, MBBS for the academic year 2014-15
कंटिन्यू नंबर आते हैं तो ये डैश लगा देते हैं, डंडा उल्टा। अंडर दी नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इंडिया कैटेगरी would be impugned, the present impugned orders of the division bench came to be passed। बस ये फिफ्थ या सिक्स कर रहे हैं। दिस अपील वॉज मेड एट द instance of the contesting respondent in both the civil appeals, who was really aggrieved of a clause in the prospectus, क्या छोड़ देते इसमें, prospectus issued by the appellants, which according to her was not valid या valid according to the तो इतना सा भी लिखते हैं, according to the contesting respondent, she being a Canadian citizen is an NRI, that therefore she was entitled to seek admission to the MBBS course in the NRI quota, but yet the definition of NRI as specified in the prospectus issued by the Chandigarh administration and the government medical college चंडीगढ़, ये अलग अलग है, चंडीगढ़ for the academic year 2012-13 would denude her of such status, and therefore it was liable to be struck down। आओ लगाओ तो लगा दें डाउन। The contesting respondent claimed that her grandfather retired as an undersecretary in the year 1994, that when he was in the service of the state of Chandigarh, he resided
लाइन कट के लिखिएगा आर। इन ए गवर्नमेंट हाउस फ्रॉम 1964 to 83 and shifted to another government, accommodation provided by the Chandigarh administration from 1983 to 93 that third, ये हाफ रहेगा third set of government accommodation was provided by the government to the father of the contesting respondent, which by occupied till line कट के December 2003 and that thereafter her father started living in the house of her grandfather in Mohali. The contesting respondent claimed that, अब बार बार जो वर्ड आता है उसको बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं, ये बार बार है द कॉन्टेस्टिंग रेस्पोंडेंट, तो इसमें से पे नेटा लगाते हैं। कॉन्टेस्टिंग रेस्पोंडेंट claimed that she passed as a regular student from Mohali, that the prescription contained in paragraph 2 of the prospectus providing from eligibility and merit for NRI seats for MBBS course, stipulating that the grandparents or parents of the candidates should be resident of Chandigarh for a minimum period of 5 years at any time, इकट्ठा लिखना at any time, since the origin of Chandigarh, and should have immovable property in her name in Chandigarh for the last at least 5 years
and a certificate to the effect, फैक्ट में छोटा करते हैं, इफेक्ट में ई बड़ा, इफेक्ट इशू बाय डीसी कम ई स्टेट ऑफिशियल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़, it was on that footing, फूल लगाना पड़ेगा लाइन काट के, footing that a challenge came to be made by the contesting respondent in the High Court in CWP number 1423 of 2011, the learned single judge by order held that the impugned clause was totally impracticable, illegal, illogically, and declared as such. However, the learned single judge went further into the question as to whether the contesting respondent can be granted admission. दोस्तों ये एक्सरसाइज 5 और 6 की आउटलाइन थी। यदि आपको कुछ समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशंस की वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।